Good morning children. Today we are going to learn science and it's a manure and fertilizer part we are going to learn today. As we have already studied the two parts of agriculture system, that is, and two parts of the crop production we can say also. Number one, when a farmer is turning the soil or the preparation of the soil up before the sowing the seeds, but after that it sows the seed, and after sowing the seeds he or she needs to apply the fertilizers and manure, followed by irrigation. So today we are going to learn 3.5 pages of manure and fertilizers and irrigation, and its different types of irrigation too. As you all know children, manure and fertilizers are one of nutrients which are added to the soil in order to yield better crops or in order to get a healthy crops. So this is manure and fertilizers. It is, as we are saying, the two words manure and fertilizer. Manure is nothing but it is an organic nutrient which is given to the plants and which is a healthy one, and which yields the products, and which also gives a healthy crops to the plants. Healthy crops it is giving. So whereas fertilizers are nothing but it is one kind of chemical manner we can say, and chemical nutrients which we are giving to the soil in order to yield the products. So let me show you some examples of these fertilizers as well as some manners. And why do you apply the manure and fertilizers before or after sowing the seeds or before irrigation? Let me give you some examples of that. So some pictures are there for you. Which one is called manure, and what are the decomposed, and how it improves the soil qualities, and how it improves the texture of the soil. Let me show you some of the pictures to you. देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. And how does it help? Manure and fertilizers helps actually the plant to get a better yield by providing nutrients to the plants. You can see children, here are some of the examples. तो ये जो देखिए नीचे से ये सब चीज़ क्या है, आप लोगों को लग रहा है ना ये सब चीज़ गंदा गंदा है बोल के, ये सब चीज़ हम बोलते हैं कंपोस्ट. Compost in the sense like animal dung, particularly cow dung, then sheep dung. So these all are examples of the manure, or call it as natural fertilizers, which improves the quality or the texture of the soil and acts like a nutrient to the soil, and which provides better yield and to get better crops also. So these are some of the examples you can see here. देख सकते हो आप लोग, जैसे कि काउ डॉन्ग ही यहाँ पे है, सभी टाइप का प्लांट एनिमल वेस्टेजेस जिससे बनता है क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट और अप्लाई. तो ये जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, आप लोग दिखे होंगे एक क्रॉप खत्म होने के बाद दूसरा क्रॉप्स लगा देते हैं ना किसान. तो ये जो होता है हमारा कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पूर इन न्यूट्रिएंट्स. धीरे धीरे से सॉइल का न्यूट्रिएंट भी कम होते होते आ रहा है. इसलिए क्या करते हैं फार्मर्स, दे गो ऑन एडिंग सम मैनर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द मैनर टू द फील्ड्स एंड टू गेट द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द field also, you can say. So that's why this manure to the fields to replenish the soil with nutrients is called as a manuring. Once again I am repeating, what is manuring? Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients, so farmers add the manure to the fields to replenish the soil with nutrients. It is called manuring. एंड मैनरिंग कैसे किया जाता है बच्चों, दिखाता हूँ. देखिए बच्चों, सेकेंड पैराग्राफ विच वन आई हैव जूम टू द कंटिन्यूस कल्टीवेशन जो लिखा गया था. तो इससे जो हमारा मैनरिंग होता है कैसे होता है बच्चों, मैनरिंग इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट मटेरियल्स आर नोन एज मैन्योर. Next comes fertilizers children. You can see this first paragraph, what is fertilizers. Actually, these are the chemicals which are rich in particular nutrients, helps the farmer to get better yield of the crops. Example of the some of the fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK. N means nitrogen, phosphorus and potassium. आप लोगों में ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ. देखिए 3 एग्जाम्पल्स है यहाँ पे.
उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, राइजोबियम इज नेम ऑफ ए बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स नाइट्रोजनस गैसेस टू nitrogen gases into plant consumable nitrogen. So this has been converted by the rhizobium bacteria. So please remember this one. और इसलिए उसे बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऐसे भी उसे बोला जाता है, उसका नाम है राइजोबियम, याद रखिए उसे। मैं आप लोगों को एक टास्क भी देना चाहूँगा फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर के अंदर डिफरेंसेस निकालने के लिए। तो मैं क्वेश्चन सब भेजा भी हूँ आप लोगों को इन द नोट्स, सो प्लीज़ रीड दैट एंड दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्लीज़ write it down. I have sent also, you will get the answers from the book, it is also available. यहाँ में देखिए तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 3 ग्लासेस आप लोग देख सकते हैं, दिस इज नॉट वेसल एक्चुअली, ABC 3 वेसल। देखिए यहाँ पे 2 बच्चे मिलके 3 ठो यूज एंड थ्रो ग्लास लेके गए हैं। पहला वाला ग्लास जो कि है A ग्लास, B ग्लास एंड C ग्लास, नहीं मीट इन द ABC। इन फर्स्ट ग्लास A add few amounts of or few quantities of soil along with little cow dung and plant a seed. B, having equal amount of soil with a little amount of urea, plant the same seed. In the C, again you take the soil and same amount of soil only, and with some seeds, the same amount of seed, and little pour the water and do the experiment. Keep it for some of the days, at least 3 to 4 days, यहाँ पे लिखा गया 7 to 8 days, एक वीक, एक हफ्ता भी रख सकते हो, बट 3-4 दिन के अंदर भी आप लोगों को रिजल्ट मालूम भी पड़ जाएगा। बट जितना ज़्यादा दिन रखोगे उतना क्लियर ऑब्जर्वेशन आएगा। 7 to 8 days after 1 week you will observe that the plant in A has grown, the seed which is planted in the glass A has grown a little, but the seed in the container B has grown more, and more in numbers are there, but in comparison to C has a growth is there, but very small growth, and the growth is not that recognizable, and the growth is very less, you can see in the comparison to the A and B and C. Why this is happening? Because B is having fertilizer, B में फर्टिलाइजर्स था एंड A में मैन्योर था, C में कुछ नहीं था, ना मैन्योर था ना फर्टिलाइजर था। सो दैट्स वाई इट शोज for the betterment and for the betterment of the crop, and along with that, if you want to get a good yield of crops, you need to add manure, you need to add fertilizers. Once you have added fertilizer in your field, then the next time onwards they will not yield, you will not able to yield the crops until and unless you are applying the fertilizer. So fertilizers are nothing but the examples are just, we are calling that it's a bribe to the field, हम उसे बोलते हैं bribe to the field बोल के। नेक्स्ट देखिए advantages the manure। देखिए ये रहा fertilizer and manure का differences। advantages क्या है ना, it enhances, manure enhances the water holding capacity, makes soil porous to exchange gases, also improves the texture of the soil, along with that it increases the number of friendly microbes just like earthworm also. So this is an example of advantages the manure over the fertilizers. फर्टिलाइज़र देखिए यदि बारिश भी होता है तो फर्टिलाइज़र भी मतलब पानी के साथ चले जाता है हमारा नदी के अंदर, जितना भी नदी होता है या पे पानी होते हैं तो जितना वाटर बॉडीज होते हैं वहाँ पे चले जाता है पानी, ओके, मतलब अभी फर्टिलाइजर्स एंड इट आल्सो अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ, बट मैन्योर के साथ जाता तो दे इट वुड नॉट अफेक्ट to our aquatic animals also. So that is one kind of advantage of manure we can say over the fertilizers. So this is all about fertilizer and manures, and let us now learn about irrigation. देखिए बच्चों irrigation क्या होता है? The supply of water to the crops at regular intervals is called as irrigation. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए जितना पानी इम्पोर्टेंट है वैसे तरह क्रॉप्स के लिए भी पानी ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। And as we know, different types of crops also need a different amount of time, water. Some crops need more amount of water, as I have said you kharif crops and rabi crops के बारे में आप लोग बताया था। Some crops need more amount of water, some crops need a very less amount of water, and some crops are grown in the different season like winter season, some are grown in the rainy season. So their water consumption capability and how much water need to be irrigated to them is also depending upon the weather condition and the area
the climatic condition of that particular area. So let me show you what is the different types or different methods, ancient methods people used to follow to irrigate the water in their fields, because it is an essential part of the crop production. Let me show you some parts to you. देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पे चार्ट है। स्टार्टिंग विद द मोड सिस्टम से देखेंगे। मोड और कॉल्ड पुली सिस्टम। नंबर 2 इज कॉल्ड चेन पंप, देख सकते हो आप लोग। नंबर 3 इज कॉल्ड डेकली सिस्टम, डेकली। एंड नंबर 4 इज कॉल्ड राहत और कॉल्ड लीवर सिस्टम। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये सब चीज़। अच्छा, तो मैं और एक भी चीज़ आप लोग को दिखाना चाहूँगा। दीज आर द सोर्सेस ऑफ वाटर बॉडीज फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन वाटर फॉर इरिगेशन, स्टार्टिंग विद कैनाल्स, ट्यूब वेल्स, ओपन वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। आप लोग देखेंगे यदि हमारा पूरा इंडिया का परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जैसे दिखा गया है। कैनाल्स 26% of our lands are cultivated due to the irrigation of water from canals, and tubewells 39% of the peoples depend upon. So 39% of land actually depend upon tube wells, and open wells 20%, tanks के ऊपर 3%, and others in the sense as I said rivers, lakes के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। पॉन्ड्स ऑल्सो दैट डिपेंड, सो दैट इज द अदर 12% ऑफ द लैंड, दैट इज ऑल टुगेदर 100% ऑफ द लैंड is supplied water in different percentage are there also. As you see, the highest percentage is the tube wells. तो ट्यूब वेल्स आज का डेट में बहुत ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ट्यूब वेल्स से ही पोर किया जाता है पानी को। आउट ऑफ दिस ऑल 100% different sources, ट्यूब वेल इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स and it plays an important role for the irrigation of water in the crops. So methods of irrigation के हिसाब से मोड सिस्टम, पहला तो पुली सिस्टम को जाते हैं। Here is an example of the mode system or the pulley system. What was happening here, children? Here more number of laborers every day they have to employ, and it also takes much more time to irrigate a large field. यदि आप लोगों के पास एकर्स एंड हेक्टर्स का फील्ड होगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। एंड ऐसे कैसे आप लोग करोगे? एक प्लांट लगभग दिन में 2 to 3 liters of वाटर दे आर ट्रांसपायरिंग, एंड हाउ मच ऑफ वाटर विथ योर एनर्जी यू विल सप्लाई। सो दिस सिस्टम इज टाइम कंज्यूमिंग, यू कैन से। अलॉन्ग विद दैट इट नीड्स मोर लेबर ऑल्सो। व्हाट हैपेंस हियर, देयर इज अ पुली in the well which is tied, and a farmer uses to pull it by the help of the pulley and pour the water. Even if a farmer is not pulling, it can also use any other kinds of mediums, like some other laborers can pull, and other farmers they can pour the water in the canal like a shape which they made from the well towards the field. They are pouring. So ये pour करते पानी वहाँ से, कहाँ से, कुआं के आसपास जहाँ पे पानी pour किया जा रहा है वहाँ से लेके पूरा फील्ड तक चारों ओर फैलता है, वहाँ पे पानी जाके पहुँचता है। बट इट टेक्स मच टाइम ऑल्सो फॉर दिस मोड सिस्टम। Dekli is a traditional system. It's the system of Dekli, which is mainly seen in rural areas. The Dekli irrigation system uses ropes and a container to get water from a well. Farmers had to take out water manually from the well and pour it into the field. This causes a lot of water wastage. So nowadays, people do not use this method of irrigation. Rahat or lever system. The Rahat system of irrigation was used in older times. This system of irrigation requires a large well in which a wheel is used. The wheel is turned by oxen, buffalo, or cows to get the water out of the well, and then the water is spread out over the crops. So you have learned that in traditional methods of irrigation, cattle or human labor was used. So children, these are the 4 ancient methods of irrigation where people used to have a labor, along with that cattle
were used in order to irrigate the water from well, and they were depending upon maximum like ट्यूब वेल और wells के ऊपर वो डिपेंड करते हैं फॉर द कल्टिवेशन के लिए. Thank you. So we have completed till this much part. Please learn, and if you have any doubt you can ask me too. Thank you. Have a good day.